Morning students, I am Jyoti Muchan in front of you, and today I am going to explain you the unit second. In the last videos I taught you unit first, and in which I taught you 4 sections, 4 chapters. But today I am going to explain you unit 2, sports. And dear students, that sports keep us fit and healthy. Uh, and they maintain our personality also. They teach us self-discipline and cooperation. When the sports are held, the team are called there, and when the team are there, then in the team it is very necessary to the cooperation. So section first is not a spectator. Not a spectator means that what is the means of a spectator? Spectator means those are watching any movie, any event or any games. Here spectator means one boy is saying that he don't want to be any spectator. Means वो कभी दर्शक नहीं बनना चाहता. Dear students, when you have attended any games, any sports, then when you see any games or sports playing players, then you think that you have to be there. When you watch cricket, at the time when Sachin or Sehwag do the centuries, then you also feel very happy that you have done a century. So in this poem, the boy says about himself. Participating in a game is more exciting than just watching it. Dear students, as you all know that we like to participate in any game or any sports. So here it is said that participating in any games we like, and it is very exciting to participate more than watching the games. जब भी आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर भी अगर कोई गेम खेला जा रहा है, कोई क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल या किसी भी तरह का कोई भी आउटडोर या इंडोर गेम खेला जा रहा है, तो हमारा मन क्या करता है कि हम भी उस गेम को खेलने जाएं. वी डोंट वांट टू बी एनी स्पेक्टेटर देयर. हम वहाँ पर एक दर्शक बनकर नहीं देखना चाहते, but we want to go there and we want to perform there do our best there. While watching any cricket, then you see any player there like Sehwag, Sachin, then you think that you are feeling yourself that you are present there, and you are performing there. So such type of things happen with everyone. इस तरह की चीज़ें सबके साथ होती है कि हर कोई चाहता है कि वो उस गेम में पार्टिसिपेट करे और अपना परफॉर्मेंस दे. इस पोएम में भी बताया गया है कि एक जो लड़का है वो गेम्स को देखना नहीं चाहता, बल्कि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है. I don't want to be a mere spectator. I want to enjoy each game. With the great boxers, I want to box as now wrestling two rocks. Here the boy says that he don't want to be any spectator. Not only spectator, he wants to play the game also. He wants to be a cricketer. He wants to be a boxer as well. So while watching, he feels that he has to perform and he has to play the game. Here he is saying that he doesn't want to be any spectator. He wants to be a boxer and want to box there. And in wrestling he want to perform. I want to hit a turn and not be just a spectator. What is the means of turn? Turn means century. As you know, dear students, when the 100 kilo get together, then it is called the turn. Here the boy says that he wants to make a century. He wants to make a century while playing a cricket. And he does not want to be any spectator just there. In cricket, hockey, kho-kho or kabaddi, each and every game he wants to play, but he doesn't want to be any spectator there. That means कि वो हर एक गेम खेलना चाहता है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो या कोई क्रिकेट हो, हॉकी हो, वो सारे गेम्स खेलना चाहता है, लेकिन वो उसमें एक दर्शक बने रहना बिल्कुल नहीं चाहता. वो चाहता है कि वो उसमें परफॉर्म करे और उस गेम को एंजॉय करें. टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट और बेसबॉल. I rushed out to play when my friends called. Dear students, as you all know that when your friends come to call you for playing any games, then you just run away there and you go there for leaving all the work which is in your hand.
आप सभी ने देखा होगा और आप सभी जानते हो अच्छे से कि जब भी आपके फ्रेंड्स आपको बुलाने आते हैं खेलने के लिए तो आप उनके साथ चले जाते हो, चाहे आपके हाथ में कोई दूसरा काम हो, whether you are doing study, whether you are playing games at your home or doing some important work, but you leave all the things and you rush with your friends. Means आप सारे important काम छोड़ के वहाँ पर खेलने चले जाते हो. That means you like to play. That's why here the boy also says that whenever my friend comes to call me, I leave all the things and I went with them for playing all the games. With each stroke there is a thrill. I don't want to be a spectator alone. I want to hit the bullseye, run, swim and dive from the sky. Here bullseye means target. टारगेट मीन्स लक्ष्य, मीन्स हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, उसी को यहाँ पर बुल्स आई कहा गया है. जैसे आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने एक अर्जुन की स्टोरी पढ़ी होगी, जिसमें अर्जुन जब द्रौपदी के पास विवाह के लिए जाता है तब वो अपना एक टारगेट बनाता है उस फिश को, उस फिश की आई को. उस फिश की आई पर उसका वो टारगेट होता है और उसको जैसे ही वो फिश की आई पर टारगेट करता है, दैट मीन्स उसका विवाह, फिर उसकी जो मैरिज होती है वो द्रौपदी के साथ हो जाती है. हियर द बुल्स आइज मीन्स द टारगेट, मीन्स उस लड़के का टारगेट ये था कि वो सेंचुरी करे और मीन्स रन करे, स्विम करे और आसमान में एक सितारे की तरह चमके. इवन वो हर एक स्ट्रोक के साथ, दैट मीन्स जब भी आप वेन एवर यू आर वॉचिंग एनी क्रिकेट, देन यू feel that your favorite cricketer is there, then he has to make all this he has to make centuries and he has to make 6 and 4 runs in all his strokes. That's why the boy think that he has to make all the stroke as his century, and he has to whenever he is playing cricket, then he has to make all the stroke as a 4th and 6th. दैट मीन्स कि वो ये चाहता है कि जितने भी वो स्ट्रोक करे सब पर वो सेंचुरी बनाए, हर एक स्ट्रोक के साथ उसका 6 लगे, उसका चौका लगे, इस तरह से वो बच्चा चाहता है. एंड वो ये भी चाहता है कि वो स्पेक्टेटर बने रहना नहीं चाहता. ही वॉन्ट्स टू प्ले द गेम. आई लव द वे माई मसल्स फ्लेक्स. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप छोटे हैं तो आपकी जो बॉडी है बहुत ही फ्लेक्सिबल है. यू हैव गॉट द फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज यू आर presently you are growing. Whenever you are growing and your body is flexible, you can use it anyway. And how the heart throbs and blood gushes a spectator. आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी में कुछ ऐसा सीन होता है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि अरे हम भी वहाँ पर होते तो काश हम ये कर देते, है ना. हम वहाँ होते तो हम ये कर देते, हम वहाँ होते तो वो कर देते. ऐसे ही जब भी हम क्रिकेट देखते हैं या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स या कोई ऐसा गेम देखते हैं, तब हमको ये लगता है कि हम अगर वहाँ होते तो हम वहाँ 6 लगा देते, या हम ये कर देते, हम वहाँ पे आउट कर देते, तो हम वहाँ पर कैच कर लेते. तो इस तरह की जो बातें हमारे मन में उस वक्त आती रहती है. यहाँ पर जो बॉय है, ही इज़ आल्सो सेइंग दैट जब भी कोई स्पेक्टेटर होता है तो उसका जो ब्लड होता है वो उसको देखकर गर्म होता है कि मतलब मैं वहाँ होता तो ये कर देता. इवन कोई ऐसी कंडीशन आती है व्हेन द क्रिकेटर इज़ देयर एंड आवर फेवरेट क्रिकेटर इज़ देयर एंड व्हेन ही हैज़ हिट आउट और ही हैज़ रन आउट, देन वी बिकम very sad to watch that cricket. Not me, I want to play each day, each sport in my own interesting way. Here the boy is saying that कि वो डेली कोई ना कोई गेम खेलना चाहता है. Each day he wants to play any game, but he thinks that he does not want to be any spectator, just only for watching. He wants to be a cricketer, a boxer, or a player of any game, but he wants to play. He does not want to be only a spectator. वो सिर्फ वॉचिंग करने वाला एक स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है
कि वो उस गेम को खेलें। और डियर स्टूडेंट्स, खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू प्ले गेम्स बिकॉज योर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल एंड योर बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल. Nowadays it is seen that that the children take mobile phone and they play games on mobile phone like cricket and badminton and every game which are played outside of the door, which are called outdoor games, they play in the mobile phone. But it is very bad and it is very harmful for ourselves because it makes us very lazy and unhealthy, unfit, and it creates a lot of problem in our life. Dear students, as your body is growing and your body is developing, so you have to play games. You have to play games inside, indoor also and outdoor also, and the games keeps you healthy and fit. That's why you have to play games. Students, हमारे लिए खेलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना. सो वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग इन आवर लाइफ. वी हैव टू डू स्टडी आल्सो एंड वी हैव टू प्ले गेम्स आल्सो. गेम्स मेक्स अस हेल्दी एंड फिट एज आई टोल्ड यू नाउ. पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं होते थे तब हम लोग बाहर के गेम्स ज़्यादा खेलते थे. बाहर के आउटडोर गेम्स खेलते थे, जैसे कैच आउट खेलते थे, आइस वाटर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे. लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें ये हो गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और उसी में गेम्स खेलते हैं. बट उससे आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है. उससे आपको हार्म होता है. आपको कोई फिज़िकल हार्म हो सकता है, आपकी आइज़ अफेक्ट हो सकती है. और नाउ डेज वी हैव सीन दैट मैनी स्टूडेंट्स, मैनी यंग चिल्ड्रन हैज़ अप्लाइड द स्पेक्स. मीन्स छोटे छोटे बच्चे, इनको चश्मा लगा हुआ है. वाई दे हैव अप्लाइड द स्पेक्स? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड वॉचिंग द मोबाइल फ़ोन, दे प्ले गेम्स इन द फ़ोन. सो दिस इज़ very harmful for yourself. It is very it will not give you any benefit because it is very harmful and it does not give you any healthy tips. If you want to be healthy or fit and you want to live for a long time, then you have to play games and to be fit. If you're we have seen that some students are there, those are very fatty and those eat very lot. They eat too much and they have become fat. They don't do exercise. They don't do any exercise. And dear students, when if you don't do any exercise, then playing games is very beneficial for your life, for your health also. Because when you play games, then the physical activity happens with you. You are playing games, the mental activity and the physical activity is going on. Then you have become very fit and healthy. Actually, dear students, when you play games, then there would be a team, and with the team you will work together and you find the feeling for each other, and the teamwork has started at that time. So in our life, everything is important. Everything is important, that you have to be healthy and you have to be fit. You have to be powerful also, and everything like if you want to build up a relation with your friends, then the new friends also come with you and they do friendship with you. So it is also necessary for bonding, for to make the relationship with our friends also for a strong relationship. So if you want to if you will play games, then you will not get benefit of your health also, but you will get the strong friendship with your friends and the cooperation, the team building nature you will build up in your life. So dear students, today this lesson is finished, and the next video I will send you in the next time, and the question answer or exercise I will send you in the PDF. You have to note down and you have to learn that exercise also. Thank you, students.